Hello, dear students. This is my 14th online lecture on magazine illustrations. I am sure that you students are taking keen interest in all my lectures. So, this is my introduction. You all know about me. I am Miss Iman, lecturer graphic designer at University of Education Lower Mall Campus, Division of Arts and Social Sciences. This is your topic number 7, magazine illustrations narratives. I am teaching you in your 8th semester. Magazine illustration is your elective course in your thesis semester. These lectures are very much helpful for you as they will guide you and will help you if you have chosen the topic on your magazine illustrations in your thesis. These lectures are very much helpful for you if you are illustrating on kids or narratives or editorials or the fashion illustrations, advertising illustrations, types, traditional illustrations. These lectures will all help you how to produce good work and an excellent work in your upcoming thesis 2020. So let's start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, and may Allah bless all my students with health and prosperity. Ameen. So, just to review, what is the definition of magazine illustrations? A magazine illustrations is a decoration, interpretations, or visual explanations of a text, concept, or process designed for integration in published media. आप लोगों को मैंने अपने पास लेक्चर्स में ये बताया था कि मैगज़ीन इलस्ट्रेशंस क्या है। जो भी आप लोगों का आइडिया है या आप लोगों का टेक्स्ट है या आप लोगों की ड्राइंग्स है, उसको आप डेकोरेटिव फॉर्म में बनाते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं, और जो इलस्ट्रेशंस मैगज़ीन्स के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, दीज आर कॉल्ड दी मैगज़ीन इलस्ट्रेशंस. लाइक योर कॉमिक्स एंड कार्टून्स इज़ अ बिग एग्जांपल इन योर मैगज़ीन इलस्ट्रेशंस. सो आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, आप लोगों के आइडियाज़ हैं, आप लोगों की टेक्स्ट हैं, उनको आप डेकोरेटेड फॉर्म्स में दिखाते हैं और इसको पब्लिश्ड मीडिया में आप एडवर्टाइज करते हैं. दीज आर कॉल्ड दी मैगज़ीन इलस्ट्रेशंस. Now, what is the narrative illustrations? In my past 13th lecture, I told you what are the kids illustrations. Now, this is the narrative illustrations. This is the kind of illustrations used to the words in the more realistic or abstract way, depending on the intention of the author and the illustrator. Narrative illustrations are based on a story and use visual clues to tell that story. The narrative is usually represented with characters or some sort of actions within the artwork. So, what are the narrative illustrations? आपकी narrative illustrations क्या हैं? आप लोगों की narrative drawings क्या हैं? narrative जो art है वो वाली art कहलाती है जो कि एक कहानी बयान करते हों, जो स्टोरी बयान करें. There is called the narrative illustrations. जो आप लोगों की इमेज हैं, आप लोगों ने उसको ऐसे जो है इलस्ट्रेट किया हो कि उसमें स्टोरी नज़र आ रही हो. दीज आर कॉल्ड दी नरेटिव इलस्ट्रेशंस. कि मैं जूम करके दिखा रही हूँ, यू कैन सी these images. These are the story based illustrations. The story based illustrations are called the narrative illustrations. कोई भी आप लोग सीक्वेंस दिखाएं इवेंट्स का और जो है स्टोरी दिखाएं, दैट इज़ कॉल्ड द नरेटिव इलस्ट्रेशंस. नरेटिव इलस्ट्रेशंस में आप कैरेक्टर्स दिखाते हैं और जो है वो आप जो है इसका आर्ट वर्क प्रेजेंट होता है नरेटिव इलस्ट्रेशन से.
इसको हम कहते हैं नरेटिव इलस्ट्रेशंस. These are also the examples of narrative illustrations. LC, जो भी illustrations जिसमें स्टोरी बयान हो रही हो, these are called the narrative illustrations. हम जो है किसी सीक्वेंस में आप स्टोरीज़ भी दिखा सकते हैं, आप इवेंट्स भी दिखा सकते हैं किसी सीक्वेंस में. आप अगर अपने पुराने टाइम में केव आर्ट के टाइम पे या ह्यूमन आर्ट जब स्टार्ट हुआ था, तो अगर आप उनके अंदर देखें तो वो अपनी स्टोरीज़ उन्होंने बनाई होती थी पिक्चर्स के साथ. तो जो पिक्चर्स स्टोरी बयान करें, दीज आर कॉल्ड दी नरेटिव इलस्ट्रेशंस. These are the examples of the narrative illustrations. This is the Halloween ghost. This is the plastic fisherman. These are the very good examples of the narrative illustrations. Flora and fauna, escape to the moon, future. आप इन सब में देख सकते हैं कि ये स्टोरी बेस्ड इमेजेस हैं, स्टोरी बेस्ड पिक्चर्स हैं. तो जो भी पिक्चर स्टोरी बयान कर रही हों, दीज आर कॉल्ड द नरेटिव इलस्ट्रेशंस. दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द हार्मनी. इट्स नेम इज़ हार्मनी. Encounter. These are the famous illustrations done by the L.C. Jamieson. So these are the good examples of the illustrations done for narratives. So narrative illustrations are based on a story and use visual clues to tell the story. The narrative is usually represented with characters or some sort of action within the artwork. Some of the earliest evidence of human art suggests that people told stories with pictures. War is a narrative example. Narrative also have characters and a setting as well as a narrator or person from whose point of view the story is told. Examples of narrative is the novel Charlotte's Web tell the story of how a young pig's life is saved by a spider who writes words about him in her web. ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थी जो हमने देखी है. Strong narrative illustrations by Luke Brooks that use bold pops of colors and compositions. These are the strong illustrations by Luke Brooks. Luke Brooks is an illustrator who is impossible not to be charmed by. Born in the UK, he already has important collaborations with plays and many others. His work combines a strong graphic and narrative styles with dramatic lighting and a narrow color palette.
He has a strong graphics and narrative style. Much of Luke Brooks' illustrations use bold colors and compositions to weave an interesting story. Since he went freelance in 2012, the Midlands Illustrations has been dishing out a wealth of editorial work for clients as impressive. These are the work as The Telegraph, AOL, Variety Road, Radio Times, Light White Lies, Computer Arts, National Geographic, Traveler, New Scientific Magazine, and IKEA. So these are the strong narrative illustrations by Luke Brooks. He likes to work on the narrative illustrations. जो लुक ब्रूक्स का काम है वो पेंसिल, ब्लैक इंक और डिजिटल मीडिया में किया जाता है। ये लुक ब्रूक्स की इलस्ट्रेशंस हैं, स्ट्रॉन्ग इलस्ट्रेशंस हैं, और ये जो हैं ये ब्लैक इंक्स में भी हैं, डिजिटल मीडिया वो यूज़ करते हैं, पेंसिल यूज़ करते हैं, और कई दफ़ा वो डिजिटल जो है वो अकेले भी अपने काम में यूज़ करते हैं। उनके जो लाइब्रेरी में हैं हैंडमेड टेक्सचर्स और ब्रश स्ट्रोक्स की बहुत ज़्यादा कलेक्शन हैं उनकी लाइब्रेरी में इलस्ट्रेशंस की। ये लुक ब्रूक्स की जो है इलस्ट्रेशंस हैं ये आप देख चुके हैं। ही इज़ यूके बॉर्न। वो अपनी बचपन से ही उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था ड्राइंग्स का, और फिर वो फ्यूचर में उनका एक ख़्वाब था कि इलस्ट्रेटर का, और उनकी जो है इलस्ट्रेटर बनने की ख्वाब जो है वो पूरा हुआ, और अब जो है उनकी इलस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा फेमस हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग नरेटिव इलस्ट्रेशंस बाय लुक ब्रूक्स। आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई है कि नरेटिव इलस्ट्रेशंस क्या हैं। स्टोरी बेस्ड पिक्चर्स आर कॉल्ड द इलस्ट्रेशंस, और जो मैगज़ीन्स में डिज़ाइन की जाती हैं दीज आर कॉल्ड द नरेटिव इलस्ट्रेशंस मैगज़ीन्स। So this is the end of my lecture number 14. Hope you have understood this lecture very well. For more lectures, just tuned and stay online for my online lectures. Okay, goodbye for today.